Hello students, this is our next topic of the chapter excretion and osmoregulation, and today we are going to study human excretory system. Okay, let us start with this topic. The parts of the excretory system are a pair of kidneys, pair of ureters and a single urinary bladder that we are going to study in detail. Let us start with the first component of the excretory system, that is pair of kidney. Okay, now kidney is red in color, dark red in color. The shape of the kidney is bean shape. The dimensions or the length of the kidney is 10 centimeter in length, whereas 5 centimeter in width, and thickness is about 4 centimeter. So these are the dimension of the kidney. Now the position of the kidney, where exactly these kidneys are present. The kidneys are attached to the dorsal body wall. Yes, the kidney are attached to the dorsal body wall, to the dorsal side of the cavity, dorsal body wall, and the exact location, these are present between 12th thoracic and 3rd lumbar vertebrae. Okay, so as you know, in our spine or in our vertebral column, the entire vertebral column is divided into different parts. The first part is your cervical, that is the neck region, and then after that cervical there is a thoracic region. In the cervical region there are 7 pairs of vertebrae. In thoracic there are 12 pairs of vertebrae. Then the lumbar region. Okay, lumbar region have 5. Then the sacrum also have 5 and coccyx have 4. Okay, so cervical, thoracic, lumbar, sacrum and coccyx, these are the part of our vertebral column. Vertebral column मतलब क्या होता है, जो पीठ की हड्डी होती है उसको कहते हैं वर्टिब्रल कॉलम. तो वर्टिब्रल कॉलम में जो ये 12 thoracic vertebrae है, टोटल कितने हो गए, 26 vertebrae हो गए. These vertebrae and all you are going to study in detail in the chapter of human skeleton, but for now I am telling you the position of the kidney. तो ये किडनी कहाँ पे प्रेजेंट होती है, तो किडनी ये जो 12th वर्टिब्री है, तो जहाँ पे लास्ट वर्टिब्री है 12th वर्टिब्री है, वो खत्म होने के बाद लंबार वर्टिब्री स्टार्ट होती. ओके, तो लंबार वर्टिब्री 3rd लंबार तक, मतलब 12th थोरासिक से 3rd लंबार तक एग्जैक्टली उनकी लोकेशन होती है, और वो जो किडनीज होती है दे आर अटैच्ड टू द डॉर्सल बॉडी वॉल. ओके, अगेन आई विल रिपीट. 7 सर्वाइकल होते हैं जो हमारे नेक रीजन में है, बैकबोन में मतलब एग्जैक्टली थोरासिक रीजन में, थोरासिक रिबकेज जो होता है वहां पे 12 वर्टिब्री होती है. लंबार रीजन मतलब कमर रीजन में 5 वर्टिब्री होती है. उसके नीचे है सैक्रम एंड कॉकिक्स. अब ये सैक्रम और कॉकिक्स जो है वो जुड़ के सिंगल बोन बनाते हैं, मतलब दे आर फ्यूज टू फॉर्म 1, 4 फ्यूज टू फॉर्म 1. सो टोटल एज यू कैन सी देयर आर 26 वर्टिब्री इन आवर वर्टिब्रल कॉलम. तो एग्जैक्टली किडनी की लोकेशन क्या है, इन बिटवीन द 12th मतलब लास्ट थोरासिक वर्टिब्री खत्म होने के बाद 3rd लंबार तक, यहाँ पे जो है, यहाँ पे दिस किडनीज आर सिचुएटेड. ओके, सो दिस इज अबाउट द पोजिशन ऑफ द किडनी. यहाँ पे ये जो किडनीज होती है वो प्रेजेंट होती है. नेक्स्ट, द किडनीज आर कॉल्ड एज रेट्रोपेरिटोनियल. क्या कहते हैं, रेट्रोपेरिटोनियल. अब ये जो किडनीज है, तो किडनी के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर है. ओके, उसको कहते हैं पेरिटोनियम. दिस इज द प्रोटेक्टिव लेयर कॉल्ड पेरिटोनियम. दिस इज कॉल्ड एज पेरिटोनियम. ओके, नाउ दिस पेरिटोनियम इज प्रेजेंट ओनली ऑन द एंटेरियर साइड. एंटेरियर साइड मतलब उसकी जो पोस्टेरियर साइड है, जैसे मैंने कहा बॉडी वॉल को अटैच्ड है, पीछे की तरफ से ये जो किडनीज है वो बॉडी वॉल को अटैच्ड है. इसकी वजह से उसके ऊपर की जो पेरिटोनियल कवरिंग है, प्रोटेक्टिव लेयर, देयर इट इज ओनली प्रेजेंट ऑन द एंटीरियर साइड, ओनली ऑन द एंटीरियर साइड. सो दिस पेरिटोनियम कवर्स द किडनी ओनली ऑन द हाफ पोर्शन, मतलब जो एंटीरियर पोर्शन होता है उसको ही ये पेरिटोनियम जो है वो कवर करता है. देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज रेट्रोपेरिटोनियल, मतलब ओनली एंटीरियर सरफेस is covered with the with this protective peritoneal covering. Okay, so after retroperitoneal, hilum. Now you can see here the outer or lateral surface
ओके। द लैटरल सर्फेस ऑफ द किडनी आर कॉन्वेक्स, बाहर की तरफ से ये कॉन्वेक्स शेप आपको दिखाई दे रहा है, बट यू कैन सी इन दिस मेडियल रीजन देयर इज अ पर्टिकुलर नॉच, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये अंदर की तरफ एक नॉच है मेडियल रीजन में, इस साइड में। तो यहाँ पे जो है ये दिस रीजन इज कॉल्ड एज हाइलम और हाइलस। दिस नॉच इन द मेडियन ऑफ द किडनी इज कॉल्ड एज हाइलम। ओके, तो ये हाइलम रीजन है। इन दिस रीजन as you can see the blood capillaries or blood vessels are arriving or they are passing out from the kidneys from this same region hilum. The nerve supply is also present at the hilum region and the ureters are also coming out from the hilum region. So hilum region is the location on the surface of the kidney where this blood vessel arises or the neural nerves are present or the ureters are coming out. Okay, so this hilum region, the hilum region, it is either coming out or passing out of the blood supply or blood vessel, then your ureters and nerves. Okay, blood supply. Okay, as you can see now this, the blood is coming towards the kidney. Now what is this? This is the dorsal aorta. Okay, so dorsal aorta brings blood towards the kidney. ये जो dorsal aorta vessel है, blood vessel है, जो blood जो है वो kidney की तरफ लाती है, brings the blood towards the kidney, inside the kidney. Now this must be impure blood that should be purified. You know the function of the kidney, that is purification of the blood. तो ये जो blood vessel है, that is dorsal aorta, that carries the blood towards the kidney. Okay, this dorsal aorta further divide into renal artery. ये जो dorsal aorta है जो blood लेके आ रहा है kidney की तरफ, वो further divide होता है renal artery. The renal means nothing but the kidney. तो kidney की तरफ जो blood लेके आता है, जो artery blood लेके आती है, that is renal artery. Okay, so this blood goes inside this kidney. Now inside this kidney there is a unit structure of blood vessel, blood capillary called as glomerulus. Okay, that we will study in detail in the next topic, that is nephron. So ये जो this is now dorsal aorta. Dorsal aorta carries blood towards the kidney. Dorsal aorta further divide into renal artery. Renal artery further divide into capillaries, blood capillaries. Blood capillaries are the finest blood vessel, and that blood capillaries forms the glomerulus inside this kidney. Okay, now what glomerulus? Glomerulus in the Bowman's capsule, or you can say it in the inside the nephron. Okay, with the glomerulus there is a filtration of blood. After filtration of blood, the blood is conducted again by the blood capillaries. Then the pure blood or blood after purification is conducted by renal vein and then inferior vena cava. Okay, so blood comes out from the kidney through first capillary, then renal vein, and then this tributary of the the inferior vena cava is the renal vein. Okay, again I will repeat, blood supply to the kidney. First, this is called as dorsal aorta. Dorsal aorta further divide into renal artery. Renal arteries further divide into fine blood capillaries which conduct blood to the glomerulus. After filtration, again the purified blood is conducted through capillaries, then renal vein, these are the renal vein, and then enters into the inferior vena cava. So the dorsal aorta and renal artery brings the blood towards the kidney, and renal veins and inferior vena cava carries blood away from the kidney after filtration. Okay, so this is about the blood supply to the kidney. Next topic is ureters. Now you can see here the blood after purification, the filtrate is formed, that is nothing but the urine. These ureters carries the urine. Okay,
Now, as you can see here, the ureters are coming out from the hilus region. Okay, pair of ureters are present here. The length of the ureter is about 40 centimeter, and the urine is conducted from this ureters pair of. Now, what are these? These are nothing but the ducts. These are tubes which carries urine, ducts for urine. Okay, which carries urine from kidneys towards the urinary bladder. तो ये जो ducts है जिनको कहते हैं ureters, उनका काम क्या होता है? They carries urine from kidneys to the ureter. Okay, the length of the ureters is about 40 centimeter. These are narrow ducts or tubes. Now, the movement of the urine is from kidney towards the urinary bladder, and the movement is nothing but the peristaltic movement. Peristaltic movement. Same peristaltic movement is also present in esophagus, which important for to engulf the food or bolus from the mouth, buccal cavity towards the stomach and intestine. तो जिस तरह से हमारे इसोफेगस में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है, उसी तरह की पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो है वो इस यूरेटर में होती है. ओके, तो यूरेटर्स क्या है? ट्यूब है. पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट मतलब क्या? एक तरह की वेव्स फॉर्म होती है, और वेव्स फॉर्म होने की वजह से ये जो यूरिन है वो किडनी की तरफ से यूरेटर में पास होगा. And this peristaltic movement also prevent the backward flow of the urine from urinary bladder to the kidney. तो peristaltic movement का importance क्या होता है? peristaltic movement always prevent the backward flow. मतलब जो डायरेक्शन में फ्लो होना चाहिए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे यूरिन फ्लो हो रही है तो ये किडनी से यूरिनरी ब्लैडर की तरफ ही होनी चाहिए. तो ये जो बैकवर्ड मूवमेंट है ये प्रिवेंट करने के लिए यूरिन की मूवमेंट यूरिनरी ब्लैडर से फिर से ऊपर किडनी यूरेटर में ना चली जाए, इसीलिए ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है. ओके, नाउ दिस यूरेटर्स, pair of ureters enters inside this urinary bladder obliquely. Okay, next is urinary bladder. Okay, now urinary bladder is lined by transitional epithelium tissues. Epithelium, it is made up of the lining of the urine. What is urinary bladder? It is a pear-shaped muscular bag. What is this? This is a pear-shaped muscular bag. Okay, which stores the urine temporary. थोड़ी देर के लिए यूरिन जो है वो स्टोर करने का काम ये यूरिनरी ब्लैडर. यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है? एक पेयर शेप का एक मस्कुलर बैग है जो यूरिन को टेम्पररी स्टोर करता है. ओके, अब ये जो लाइनिंग है यूरिनरी ब्लैडर की, जो लाइनिंग है वो ट्रांजिशनल इपिथेलियम से बनी होती है. ट्रांजिशनल इपिथेलियम, ट्रांजिशनल इपिथेलियम. ओके, एंड फर्दर इट इज अ मस्क्यूलर सैक. तो मसल्स जो है वो स्मूथ मसल्स है. ये जो यूरिनरी ब्लैडर इट्स लाइक अ पाउच, इट्स लाइक अ सैक. तो ये जो मसल्स है इस सैक के या फिर पाउच के यूरिनरी ब्लैडर के, दीज आर नथिंग बट द स्मूथ मसल्स. कौन से मसल से बने हैं? स्मूथ मसल्स. ओके, एंड दीज स्मूथ मसल्स आर कॉल्ड एज डेट्रूसर मसल. इनको क्या कहते हैं? detrusor muscles. The smooth muscles of urinary bladder are called as detrusor muscles. Okay, and this detrusor muscles and transitional epithelium layer help in the elastic movement. मतलब it can contract. ये जो elasticity है urinary bladder की, जैसे when it stores the urine it will expel, and after passing out of the urine it will contract. So ये जो वॉल की इलास्टिसिटी है लाइक अ बलून, दैट इज ड्यू टू डेट्रूसर मसल्स एंड ट्रांजिशनल इपिथेलियम लेयर. ओके, नाउ यूरिन पासेस फ्रॉम दिस ureters, the tubes enters and gets stored temporarily inside the urinary bladder. Okay, now what is the capacity of this urinary bladder? Urinary bladder एक पाउच है कि जिसमें यूरिन जो है वो टेम्पररी स्टोर होती है. The capacity of the urinary bladder is about 500 ml to 1000 ml. तो उसकी कैपेसिटी क्या होती है? 500 to
1000 ml इतनी कैपेसिटी होती है यूरिनरी ब्लैडर की. ओके, अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ यू कैन सी हियर the ureters are open here obliquely. Okay, this oblique, there are no valves present. इस यूरिनरी ब्लैडर में किसी भी तरह के valves नहीं. As you know valves, what is the function of valve? Again to prevent the backward flow. एक बार यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन आने के बाद फिर से बैकवर्ड मूवमेंट ना हो, इसीलिए कहीं जैसे नाउ हियर valves are absent. यूरिनरी ब्लैडर में वॉल्व्स एब्सेंट होते. जनरली वॉल्व्स कहाँ पे होते? जैसे हार्ट में है, टू प्रिवेंट द बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ द ब्लड. पर यहाँ पे उस तरह के वॉल्व्स नहीं है, तो यहाँ पे वॉल्व्स प्रेजेंट नहीं है, फिर भी यहाँ पे यूरिन की मूवमेंट बैकवर्ड क्यों नहीं होती? ड्यू टू द लैटरल ओपनिंग और ऑब्लिक ओपनिंग ऑफ दिस यूरेटर्स. अब जो ये यूरेटर्स है वो इस तरह से ओपन नहीं हो रहे, दे आर ओपनिंग लाइक दिस. ओके, they are opening like this. So ये जो ऑब्लिक या फिर लैटरल ओपनिंग है यूरेटर्स की, उसकी वजह से एक बार यूरिन यूरिनरी ब्लैडर में एंटर हो गया तो फिर से यूरेटर में बैकवर्ड मूवमेंट जो है वो प्रिवेंट होती. ओके, नाउ पेयर शेप यूरिनरी ब्लैडर मेड अप ऑफ detrusor muscles which are the smooth muscles. Now in human body there are different kind of muscles. The muscles are smooth muscle, striated muscle and cardiac muscle. So these are the three types of muscles present in human body. Smooth muscles and your cardiac muscles are involuntary muscles. अब ये involuntary movement क्या होते हैं? Involuntary मतलब the movement which we cannot control, which are not under the control of our will. जो भी movement है जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे हार्ट की बीट we cannot control. Okay, so जैसे cardiac muscles जो they are present in the heart, they are also involuntary movement, the movement which cannot control. Same the smooth muscles are also involuntary movement. तो ये जो यूरिनरी ब्लैडर का कॉन्ट्रैक्शन है या फिर रिलैक्सेशन है, इलास्टिसिटी, दैट इज ऑल्सो नॉट अंडर द आवर कंट्रोल बिकॉज दे आर मेड ऑफ स्मूथ मसल. striated muscles, the muscles of the body which are attached to the bones, जैसे in our legs, hands, everywhere where these striated muscles are present. ये जो movement है that is अंडर द कंट्रोल ऑफ अवर विल. जैसे हाथ की मूवमेंट है, पैर की मूवमेंट है, जहाँ पे स्ट्राइटेड मसल्स है, तो ये जो मूवमेंट है वो हम कंट्रोल कर सकते हैं. बट हियर स्मूथ मसल्स द विच आर नॉट अंडर द कंट्रोल, देयरफॉर दीज आर कॉल्ड एज इनवॉलंटरी मसल्स. ओके, तो ये जो डेट्रूसर मसल्स है और ट्रांजिशनल एपिथेलियम है जिसकी वजह से इस यूरिनरी ब्लैडर की इलास्टिसिटी. ओके, फर्दर नाउ यूरिनरी ब्लैडर further opens into the urethra. Urethra is the final opening of the excretory system from where the urine pass out. Okay, so urethra, again here the urethra, there is a sphincter present. Sphincter is voluntary sphincter. This sphincter is voluntary. जैसे मैंने अभी बताया voluntary which अंडर द कंट्रोल ऑफ अवर विल. जो मूवमेंट हम कंट्रोल कर सकते हैं उसको कहते हैं वॉलंटरी. तो ये स्पिंक्टर मतलब क्या है? इट्स लाइक एन ओपनिंग. तो ये स्पिंक्टर ओपन होता है, क्लोज होता है. तो ये जो स्पिंक्टर है मतलब फाइनल ओपनिंग है, तो ये वॉलंटरी है. सो एज पर द डिजायर, उसको दैट इज कॉल्ड एज अ मिक्चुरिएशन. Micturition is nothing but the urination, मतलब passing out of the urine. Okay, so from this sphincter, the sphincter is called as urethral sphincter. From the urethral sphincter, now this opening is guarded by sphincter. Okay, जैसे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनल में भी स्पिंक्टर्स है, कार्डियक स्पिंक्टर है, पाइलोरिक स्पिंक्टर है. तो उसी तरह के स्पिंक्टर जो ओपन होते हैं क्लोज होते हैं. एक बार मूवमेंट होगी तो स्पिंक्टर क्लोज हो जाएगा, और जब हमें जैसे व्हेन यूरिन इज अबाउट टू पास देन स्पिंक्टर विल ओपन. ओपनिंग, व्हाट इज स्पिंक्टर? इट इज अ वॉल और इट इज अ स्पेशल ओपनिंग at the end of the urinary bladder. Okay, so the passing out of the urine, or that is nothing but the urination, there is a word called micturition. So micturiation is through this urethral sphincter. The urethral sphincter, the sphincter is guarded
ये जो यूरेथ्रा है उसको गार्ड करने के लिए यहाँ पे स्पिंक्टर प्रेजेंट होता है. ओके, so this is about our human excretory system. Again I will repeat. First component of the excretory system is pair of kidneys. The pair of kidneys, these are the dimension 10 by 5, 4 centimeter is the thickness, dark red in color, bean shape. Okay, the convex area, lateral region, the notch present in the medium called hilum, the blood supply, blood vessel or nerves or ureters opens, arises or goes out from this hilum region. Blood supply, the impure blood is conducted from this dorsal aorta to the renal artery, then capillaries, then further purified blood or after filtration from the glomerulus capillaries, from the renal vein, then the inferior vena cava towards the body. This is about the blood supply. Ureters, the pair of ureters about 4 centimeter long. These are the conducting urine conducting ducts or tubes. Okay, and they the movement of the urine inside the ureter is the nothing but a peristaltic movement which open obliquely or laterally inside the urinary bladder. The wall of the urinary bladder is made up of detrusor muscles which are smooth muscles and lined by transitional epithelium which is responsible for the elasticity, and the opening is guarded by the sphincter called as urethral sphincter. The passing out of the urine is nothing but the urination called as the micturition. So this is about the human excretory system. Now let us study the function of the kidney. What is the exactly function of the kidney? As you know, the kidney removes the toxic. As you know, the what are the toxic or waste we have studied in the previous topic, that is ureotelism. So in ureotelism, the ammonia get converted into the urea from more toxic to the less toxic, and urea forms the urine. Okay, so what is urea? Urea is the nitrogenous waste substance. So removal of that urea is the main function. So it means the purification of blood occurs in kidney. So let us study the function of the kidney in detail. First, eliminate the nitrogenous waste. The nitrogenous waste can be ammonia, urea, uric acid. In our body, ammonia is converted into urea by ornithine cycle. So elimination of nitrogenous harmful waste. Then osmoregulation. What is osmoregulation? Maintaining the balance. Water balance. Water and salt का balance करना is nothing but the osmoregulation. Okay. Maintain hydrogen ion concentration. Body में, body fluid में hydrogen ion का concentration balance करना, maintain करना is called as isoionic process. Next, maintaining the concentration of ions. तो हमारे body fluid में कौन से ions होते हैं? Like sodium is there, potassium is there, chlorine is there. Like removal of chlorine और potassium, अगर जो भी आयंस जो है वो अगर एक्सेसिव अमाउंट में है तो उसको रिमूव करना. सम आयंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, बट इफ आयंस आर एक्सेसिव इन अमाउंट देन रिमूवल. तो सो मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ दिस आयंस. So to adjust the sodium, potassium, chlorine, ion concentration. Next, pH regulation. pH means acid base regulation. हमारे बॉडी का जो pH मेंटेन करना है, जो pH मेंटेन करने के लिए आयन का भी पार्टिसिपेशन है वहां पे. तो pH regulation means maintaining acid base balance in our body. Next, remove excessive foreign body. जैसे लास्ट टॉपिक में बताया था, उसमें भी फंक्शन हमने स्टडी किए थे. तो जो एक्सेसिव ड्रग्स है या फिर एक्सेसिव हार्मोन है उनको रिमूव करना, ये भी फंक्शन है. ऑल्सो रिमूवल ऑफ द पिगमेंट्स. जैसे इन यूरिन देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट कॉल्ड यूरोक्रोम. सो रिमूवल ऑफ पिगमेंट्स लाइक यूरोक्रोम और एक्सेसिव ड्रग्स, मेडिसिन्स. Homeostasis. Homeostasis means maintaining the balance. What is the meaning of homeostasis? होम्योस्टैटिक बैलेंस मतलब शरीर का बैलेंस. हमारे शरीर में अलग अलग तरीके के ऑर्गन हैं जो हमारे शरीर का बैलेंस मेंटेन करते हैं, तो उसको कहते हैं होम्योस्टैटिक बैलेंस. सो दिस ओवरऑल लाइक मेंटेनिंग द वाटर बैलेंस, मेंटेनेंस ऑफ वाटर बैलेंस, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन बैलेंस, या फिर मेंटेनेंस ऑफ दिस ion, so or acid base. So overall these components help in maintaining the balance of the body, and so this is the very important function of the body to maintain the balance.
and to maintain of the balance is nothing but the homeostasis. Okay students, so this is about this topic called human excretory system. In next topic we are going to study the LS of kidney. Thank you.